Good morning, children. Today we are going to do a new chapter, The Mumbai Musician. What is the name of the chapter? The Mumbai Musician. First, the poem we did, it was I am a music man. Now, this is also about a music. This is the story about the Mumbai Musician. Now, you must be thinking why the title is given like that, The Mumbai Musician. I will tell you a story. It is a story about a donkey who used to work with his master for a long time. What work he used to do? He used to carry heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. So he was now very tired and old. What happened? He was very tired and old. So the master told to the donkey name is what? Gopu. So the master talked with Gopu. He told to Gopu that you have become old. You can go to Mumbai. You can go and see the world before you become too old. The Gopu's master told to Gopu that before you become too old, you better go and see the whole world. Now what happens? The Gopu wants to become a singer. So he selected the city Mumbai to go. Why? Because he was very good at music. So he decided to go over there and to become a musician. What to become? To become a musician. So he started going with a sack of corn on his back. On the way he met a dog. The name of the dog was Dopu. So Dopu asked Gopu, where are you going? So Gopu said, I am going to Mumbai to become a musician. What to become? To become a musician. So Gopu is inviting Dopu also that if you wish, you can come with me. So again, both friends went together to reach Mumbai to become a musician. They saw a ball of fur in the middle of the road. And you know what it was? It was the cat. It was the cat. So again, the cat is looking at Gopu and Dopu together. So she also asked the question, where are you going? Who are you? So they said, Gopu and Dopu, we are going to Mumbai to become a musician. If you wish, you can join us. So she joined. Who joined? The furry cat. On the way, they met again a cock. Soon they met a cock. So the cock is also asking the same question. Where are you going? So they said, we are going to Mumbai to become a musician. So they met Cuckoo, the cock. So he also told, I love music. And he also wanted to join. So they all started walking to reach Mumbai to become a musician. They all reached a house with a light. What happened? There was a house. They saw a small house full of light on the way. They were so much tired and hungry. They wanted to now have something. They were very and too much hungry. They looked into the house. They saw delicious food on the table. So their mouth started watering because they were hungry. So now how to have those delicious food? Because people were inside. Who were there in the house? The people were inside. So they were thinking how to scare them so that they run away. Leave the food and they run away. So all four of them, that is Gopu, Dopu, the furry cat and the cuckoo, all four of them started singing loudly. Listening to their voice, it was very horrible because all four of them started singing. So the people inside the house became scared and they ran out of the house as fast as possible. So Gopu, Dopu and furry cat went into the house and they ate all the food till they could eat no more because the food was too much. So they all went inside the house
As soon as the people from the house left away, ran away to save their life, this all of them went inside the house when the house became empty, and they started eating the food. And they went on eating and eating, they went on eating and eating till they could not eat any more. ये कहानी है एक गोपू के बारे में। गोपू कौन है? वो एक गधा है। वो इसके मास्टर के लिए काम करता था। क्या काम करता था कि गन्ने का खेत होता है, शुगर केन, तो शुगर केन और कॉर्न, वो उसके जो पोटली होती है उसके बैक पे उसका मास्टर उसको हमेशा इतना वज़न उठा के उसको सैक ऑफ कॉर्न, हैवी सैक ऑफ कॉर्न और शुगर केन उसको फार्म से लेके फैक्ट्री तक हमेशा उसको लेके जाता था, इस पे बैक पे वज़न डाल के। तो उसके मास्टर को एहसास हुआ कि ये काफ़ी अभी ओल्ड हो जाएगा, तो उससे पहले उसे वो कहता है कि आप पूरी दुनिया घुमा, वरना आप नहीं घूम सकोगे अगर आप बूढ़े हो गए तो गोपू की क्या इच्छा थी? म्यूजिशियन बनने की। तो वो कहाँ जाने का सोचा? उसने मुंबई जाने का सोचा कि मैं मुंबई जाऊँगा और काफ़ी बड़ा म्यूजिशियन बनूँगा। तो वो चल पड़ा। रास्ते में उसे कौन मिला? उसको एक डॉग, एक कुत्ता मिला, उसका नाम था दोपू। तो दोपू ने भी उसे देखा कि जा रहा है चलते हुए, कहाँ जा रहा होगा, तो उसको उत्सुकता हुई। उसने गोपू से प्रश्न किया कि आप कहाँ जा रहे हो दोस्त? तो गोपू ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे म्यूजिशियन बनना है और मुझे मुंबई में काफ़ी वहाँ पे म्यूज़िक है, तो मुझे मुंबई वहाँ पे जाना है म्यूजिशियन बनने के लिए, तो मैं मुंबई म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ। तो दोपू ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो गोपू और दोपू जो फ्रेंड्स बन गए, उन लोग ने चलना शुरू किया। फिर रास्ते में उन्हें और एक दोस्त मिला, वो था फरी द कैट। उसने भी वही सेम प्रश्न पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तब गोपू दोपू ने कहा कि हम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, इसलिए हम मुंबई जा रहे हैं। तो वो फरी कैट भी उनके साथ हो गई। फिर थोड़े और चले, वो 3 दोस्त चलते गए तो आगे उन्हें कौन मिला? कुकू द कॉक। उसने भी वही प्रश्न पूछा। तो गोपू दोपू और फरी कैट ने उससे वही जवाब दिया कि हम मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए। तो ये सुनते ही कुकू द कॉक खुश हो गया, उसको भी जाना था, तो वो भी जॉइंट हो गई वो लोग के साथ। फिर वो लोग चलते गए रास्ते में उन्हें एक घर देखा। तो घर में टेबल पे डिलीशियस एकदम टेस्टी खाना देखा, और वैसे भी काफ़ी टाइम से लोग चल रहे थे तो काफ़ी थक भी गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी तेज़ी से। तो खाना देखते उनके मुंह में पानी आने लगा। लेकिन वो खाना किस तरह से खाते? क्योंकि उस घर में कुछ लोग बैठे हुए थे टेबल के आसपास। तो उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने कहा कि हम 4 जन मिलके एक साथ में हम गाना गाएंगे, गाना बजाएंगे, हम गाना गाएंगे। तो ये गोपू की आइडिया सबको पसंद आई और सब ने मिलकर एक साथ में गाना शुरू किया। वैसे तुरंत ही गाना शुरू किया तो अंदर के लोग एकदम घबरा गए और उन्हें लगा कि भूत आ गया, और तुरंत एकदम डर के मारे वो लोग घर से भाग गए। फिर गोपू दोपू एंड फरी कैट घर में गए और उन्होंने खाना शुरू किया, और खाते गए जब तक उनका मन ना भर गया। तो ये कहानी है द मुंबई म्यूजिशियन की। नाउ विल रीड द लेसन। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए डोंकी नेम्ड गोपू। एक समय की बात है, एक डोंकी था, उसका नाम था गोपू। ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ ए फार्मर। वो किसके साथ काम करता था? एक फार्मर के साथ, खेडूत के साथ वो काफ़ी समय से काम करता था। ही हैड कैरिड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न। क्या वो लेके जाता था वज़नदार कॉर्न का जो गुण भर के होता है, सैक, SACK,
a sacks of corn or sugarcane from the farm to the factory. खेत से लेके वो शुगर केन और सैक ऑफ कॉर्न लेके वो फैक्ट्री तक जाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. द फार्मर सेड टू गोपू. जो खेडूत था जिसके लिए गोपू काम करता था, उसने एक दिन गोपू से कहा, यू आर ए गुड डोंकी. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. जो खेडूत था जिसके लिए गोपू काम करता था, उससे दया आई. उसने गोपू से क्या कहा कि ये सैक ऑफ कॉर्न आप ले जाओ अपने साथ और आप पूरी दुनिया घूम लो. जब आप पहले नहीं तो फिर बूढ़े हो जाओ, से पहले आप पूरी दुनिया घूम लो. वो खेडूत ने जो काम करता था उसके मालिक ने उसे ऐसा कहा. सो गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. He set off towards the city of मुंबई. तो क्या हुआ, गोपू ने मुस्कुराया, खुश हो गया और वो तो निकल पड़ा. वो कहाँ निकल पड़ा पता है आपको? मुंबई. द सिटी ऑफ मुंबई की तरफ वो जाने लगा. आई एम गुड एट म्यूज़िक. गोपू अपने मन ही मन में कहने लगा कि मैं म्यूज़िक में तो बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ. आई विल गो टू मुंबई एंड बी ए म्यूजिशियन देयर. गोपू ने क्या कहा कि मैं बहुत ही अच्छा म्यूज़िक में, तो मैं मुंबई जाऊँगा और मैं म्यूजिशियन बनूँगा. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. वो वैसे ही चलता गया तो रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक डॉग से. किससे हुई? डॉग से. वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डोपू. डोपू को वो जो डॉग था उसका नाम था डोपू. तो डोपू ने क्या किया, गोपू से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. गोपू ने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए. वुड यू लाइक टू कम टू? आस्क्ड गोपू. गोपू ने डोपू से ये क्वेश्चन पूछा कि मैं तो म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ, आपको आना है मेरे साथ? येस आई वॉन्टेड. आई वुड, रिप्लाइड डोपू. सो लुकिंग एट दिस what happened? The dog, the Dopu, replied yes. He agreed to join Gopu. Off went the two friends on the dusty road to Mumbai. So these two friends, you can see over here, they started walking on the dusty roads. They saw a ball of fur in the middle of the road. Now what did they saw? They saw a ball of fur in the middle of the road. Who are you? They asked. Gopu and Dopu, both of them asked this fur of, who are you? I am Furry, the cat, said the cat. The little cat introduced himself by saying that I am Furry, the cat. Would you like to come with us to become a musician? Asked Gopu and Dopu together. Here Gopu and Dopu are asking, who? Asking Furry. Okay, do you want to come with us Mumbai? We are going to go over there to become a musician. Oh, I would love to come. The Furry, the cat, decided to come. She said, I would love to come along, replied Furry. So off went the three together to become Mumbai musician. So what happened? Three of them started walking to become a musician in Mumbai. Who? Gopu, Dopu and Furry the cat. Now soon they met Cuckoo the cock. Whom they met? Cuckoo the cock. I love music and wish to join your band. Cuckoo the cock is saying to three of them, I love music and I wish to join. They all reached a house with a light. On the way they met a house with a light. What happened? They all reached a house with a light. They were tired and hungry. Even they were tired and hungry. They peeped in through the window. What happened? All three of them peeped into the window because they saw the light on.
So what did they see from the window? And saw a table with delicious food. They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. Now what happened? As Gopu, Dopu, Furry Cat, Cuckoo the cock, all of them looked through the window to what is there inside the house. And they saw on the table it is a delicious food. So all of them decided to sing as they wanted to become a musician. So all of them, what happened, decided to sing to let the people inside know that they were musicians. They sang. What happened? They sang. They started singing. The people inside thought that ghost had come to scare them. The people who were inside, see, you can see, they started running here and there because they heard the song of the four of them singing. So they thought that the ghost is here. They ran away as fast as they could. They started running as fast as they could. Gopu, Dopu and Furry went into the house. What happened? They went into the house and ate the food. And what happened? Ate the food. Till they could not eat any more. Till they could not eat any more. I hope you have understood the chapter, children. Over here, we'll read the new words. Tired, 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 tired यानी थक जाना. musician, musician, the person who play music is called musician. peeped, peeped यानी ताक झाक करना, यहाँ देखना. delicious, delicious, delicious means very tasty, बहुत बढ़िया. ghost, ghosts, ghost. And the last is scare, 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 scare. So dear children, I hope you have understood the chapter. Do please read at home once. Read the full chapter one time and we'll do the exercise in the next session. Thank you.